Now come to the active transport. It is a very important segment of that chapter, that is the transport through the cell membrane. In active transport is the transport process that utilizes energy and occurs against the gradient in is the active transport. So इससे पहले हमने जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े थे उनमें कहीं पे भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा था, स्पेसिफिकली एनर्जी इन एटीपी फॉर्म. बट इन दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर वुड बी use of energy. By passive transport processes, the composition of intracellular fluid tends to equalize with that of composition of extracellular fluid. However, this should never happen practically, as it threatens cell volume and intracellular solute concentrations that are not compatible with life. So जो passive diffusion जो process थे वो basically they were creating equality. So it might be possible, or this condition would not be beneficial for human life, because इनइक्वलिटी होगी तभी तो डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा. सो इट माइट बी पॉसिबल कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी का यूज किया जाता है. सो दिस कंडीशन वुड कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वहां पे वी आर मूविंग मॉलिक्यूल्स, सॉरी, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट बाय यूजिंग एनर्जी. That would come into the category of active transport. Primary active transport. It is a transport mechanism that directly utilizes metabolic energy for the transport process. The mechanism is operated by some ion pumps or ATPs. The examples are sodium potassium ATPs, that is also called sodium potassium pump, calcium ATPs. Other examples are mitochondrial ATP synthetase, CFTR proteins, MDR1 proteins. So all these are examples of primary active transport. Now come to the sodium potassium ATPs or sodium potassium pump. Sodium potassium pump is present in all eukaryotic cells. This is an antipode that pumps potassium into the cell and sodium out of the cell against their concentration gradient. So here we are using a term that is antipode. Antipode means these the movement or the direction of these ions is opposite to each other. Like in this sodium potassium ATPs, यहाँ पे जो potassium it is moving inside the cell and sodium is moving outside the cell. This antipode transport system is primarily responsible for maintaining the high potassium and low sodium concentration inside the cell. जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाहर की तरफ ज़्यादा होगा. This would create a negative membrane potential inside the cell membrane. Now come to the importance of this electrogenic pump. It creates electric potential across the membrane, which is a basic requirement in nerve and muscle fiber for transmitting electrical signals. जो सोडियम पोटेशियम पंप बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड दिस मेम्ब्रेन जो नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट हो जाता है. एंड सो सेल वुड बी इन पोलराइज स्टेट, और इस पोलराइज स्टेट में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो फिर इम्पल्स जनरेशन होता है, एंड दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर nerve conduction or muscle contraction. Secondary active transport. Secondary active transport it couples the movement of the driving ion with the movement of another molecule, that is the driven molecule, against the concentration gradient. Usually sodium is the driver solute for most of these mechanisms. Energy created by sodium gradient is utilized for transport of other solutes. So primary और secondary active transport में जो main difference है, that is इन केस ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी जो था बेसिकली वो उसी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसी और मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा था, वहां पे एटीपी यूज हो रहा है, और उसी एनर्जी को फिर दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है. सो द एग्जांपल्स आर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट. सो सोडियम का जो मूवमेंट है उसके लिए एनर्जी यूज किया जा रहा है, बट साथ में ग्लूकोज का भी मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट होता है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट. एंड सिम्पोर्ट मींस इट इज इन द सेम डायरेक्शन. प्रीवियस एग्जांपल हमने एंटीपोर्ट का देखा था जिसमें जो मॉलिक्यूल्स थे उनके जो डायरेक्शन थे इट वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बट इन केस ऑफ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट द डायरेक्शन इज
both the molecules are moving in the same direction. That's why it is called symport transport. In this image we can see the sodium and glucose both are moving in the same direction. So sodium glucose co-transport is an example of a symport